Okay, so today we have to start up with alkynes, and in alkynes we have to deal with triple bond, and the general formula for alkynes is CnH2n minus 2, and carbon, that's the central atom in an alkyne, is sp hybridized. ठीक है. Okay, so I was waiting for a few students to join in. So they were calling me कि sir admit कर लें, so I was waiting. So are they here? Yeah, they are active. ठीक है. So we can proceed. Central atom is an sp hybridized atom, and it has basically a triple bond in it, and the nomenclature is basically the same thing. That's the alkyne. आपने बाकी चीजें भी पढ़ी भी हैं, बट अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि अब हम क्या पैटर्न करते हैं, तो पैटर्न यूजुअली रिमेन सेम. Yes, going to start up with preparation of alkynes. So let's start up with preparation of alkynes. So first is by dehydrohalogenation of vicinal dihalides. So if you recall, ये आपने किया था, पहले भी किया था आपने, लेकिन आपने उससे alkenes बनाए थे. Now we are going to have alkynes prepared from that. तो हम यहाँ पे क्या लेके आएंगे? हम लेके आएंगे vicinal dihalide. Vicinal dihalide was supposed to be a halogen. So let's say we are having two halogens on two different atoms. That was supposed to be a vicinal dihalide. And if we, if you recall, there was a KOH for the preparation of what? For the preparation of an alkene. But यहाँ पे क्या additional होना चाहिए? यहाँ पे additional होना चाहिए कि we have 2 KOH. So what does it, take? So potassium takes alkyl halides, OH forms attached on, these two hydrogen. So what happens is we have 2 moles of water. Besides that, we have a pure alkyne.
तो जिसने पहले वाले रिएक्शन अगर बच्चे ने याद कर ली हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एनालॉजी है, वो ये कर सकता है, उसको ये बात पता होगी। ठीक है। देन सेकंड इज बाय, आपको याद आ जाए वहां पे भी हमने जेमिनल हेलाइट्स का कॉन्सेप्ट एक दफा सीखा था। तो अगेन बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन और जेमिनल हेलाइट्स। यस। So now we have two halides on the same carbon. So reaction stays same to KOH. That happens in an alcoholic medium. So it's alcoholic potash. So alcoholic potash. So we have an ethyne. ठीक है। अच्छा मैंने एग्जांपल मिस की है, तो लेट्स राइट एन एग्जांपल हियर। ब्रोमीन, ब्रोमीन, hydrogen, 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 and then we have 2 KOH, alcoholic potash. So we'll have potassium bromide, water, and a pure alkyne. That's an ethyne. I think अब इतना nomenclature हमने किया है कि अब हम ये बड़े आराम से मार्क कर सकते हैं। This would be 1,2-dibromo ethane। ठीक है। इसी तरह से आप इसकी एग्जांपल पे लिख सकते हो। So that would be something like this. एग्जाम्पल में हम ये लिख सकते हैं KCl, then we'll have water, then we'll have ethyne. So this would be 1,1-dichloroethane alongside potassium chloride and ethyne. Can I change my slide? Now the third procedure is we can have dehalogenation. जी इब्राहिम बिल्कुल ऐसे ही। So that was basically, that's not, the requirement for ethyne being in an alcoholic medium. The requirement is for potassium hydroxide. Okay, please write on the chat box. I have to change the slide. If not, please tell me. आगे जाके पे पीछे आते ना तो it kind of creates confusion for everyone. So please, when I ask you guys, can I change my slide? Type just yeah, why on your chat, or just unmute your mic and tell me, sir, you have to wait or not. If no one is responding, then I'm going to say कि सबने कर लिया।
Let's move on. Dehalogenation of tetra halides. I don't know कि कोई बच्चे क्लास में नए भी आए ग्रुप में आते रहते हैं, but for their information, these slides won't be shared with anyone. So in case you missed something up, you have to watch the video and then you can go through whatever you have missed for any reason when you're unable to attend the class. The expectation from my side is whenever I'm explaining, we are writing an equation, so you guys have to write it up in your journals and all, maybe tablets, anywhere you want to. So you have to take notes by yourself. Okay. Just a reminder for new students, if there are any. So general equation for tetrahalides would be something like this. And now, which substance do we reacted with? हमने ये काम भी अपने उसमें वहां पे किया था, alkenes में किया था. So that was zinc. That's great. So अगर एक zinc लेके आएंगे, so it will take 2 halogens. So if we bring in 2 moles of zinc, so and slightly heat this up, so it will take all 4 halides. So that's 2 ZnX2. 2 ZnX2. And then we'll have an alkyne. Okay, let's do an example. So let's use bromine here. अच्छा, ऐसा नहीं है कि 2 ब्रोमीन हो जाए, 2 हेलोजन हो जाए, they have to be like halides. ठीक है. So on heating, what do we have? Zinc bromide and an ethyne. Number 4. So now we can have long chain alkynes from essentially ethyne. So it's one of the methods of preparation of long chain alkynes because हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं. So it is something like, if we have ethyne, we react it with sodium, and the condition is this reaction happens in liquid ammonia. That's NH4OH. Okay. Either you can write this or that. It's the same thing. So what do we have? Hydrogen gets substituted. So we have this alongside hydrogen, and then we reacted with an alkyl halide. बल्कि हम एक सोडियम सॉल्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन चलो अल्काइल हैलाइड से कर लो, कंप्लीट कर लो. So we reacted with alkyl halide. So what do we have? We have then sodium salt. These 2 sodium atoms would join this halogen here, and this R would stay connected to, would replace this sodium. So let's bring it here. So that would be RC triple bond CN. So that can be a long chain alkyne, and that's an ethyne. Can I change my slide? So meanwhile, you guys can write the example for this. तो इसका मतलब टाइम पास करने के लिए नाम लिख लेता हूँ. We know sodium ethyne, that's sodium carbide.
Ibrahim, they are essentially the same compounds. They are the same things. NH3 in liquid form with water basically forms ammonium hydroxide. The only difference is if we have liquid ammonia, that would be more concentrated. If we have ammonium hydroxide, then it would be less concentrated. Okay. Sodium carbide, then alkyl halide, then sodium halide, and then we have. Okay. Can I now change my slide? Okay. चलें since you guys want me to wait, तो फिर मैं इसी पेज पे इसकी एग्जांपल लिख लेता हूँ. We can start up with anything. We can react it with sodium, and then the usual conditions, ammonia liquid, and then what we have is sodium carbide with hydrogen, and then this reaction can further proceed with maybe chloromethane. Okay. So what do we have then? We have then sodium chloride and CH3C triple bond CH3. So it's 2-butyne or butene. Can I now change my slide? जो लोग क्लास में अभी आए हैं उनको बताते चले हम स्टार्टेड अप विद अल्काइंस में टेस्ट के बारे में पूछ रहा था. बच्चों ने यूजुअली का टेस्ट बहुत आसान था. उसके बाद फिर हमने अल्काइंस की पहले प्रिपरेशन की है और अल्काइंस की प्रिपरेशन में वी आर एट द फोर्थ रिएक्शन. यहाँ से भी स्टार्टेड अप और यहाँ पे अभी हम हैं. ठीक है. लेट्स मूव ऑन. ओवरऑल फीडबैक टेस्ट का क्या है सबके लिए आसान. सिर्फ केमिस्ट्री का पूछ रहा हूँ, अदर स्पेसिस का नहीं पूछ रहा हूँ, अपना केमिस्ट्री का. So this was number 4. Number 5. Number 5 is that the usual Kolb's electrolytic method. ये आपकी जान नहीं छोड़ रहा है. ये तीनों में था. तीसरी दफा आया है. ठीक है. तो हमने पहले यूज किया था पोटेशियम सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट. फिर हमने यूज किया था पोटेशियम या सोडियम सल्फोनेट. आज हम यूज करेंगे पोटेशियम या सोडियम का डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड को उस जमाने में कहते थे फ्यूमर. सो इट्स अ पोटेशियम फ्यूमरेट. फ्यूमरेट. और फिर क्या करते हैं भाई, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. तो क्या होगा भाई, कैटाइंस और एनाइंस स्प्लिट अप हो जाएंगे. CH3 CH3 अलग अलग हो जाएगा और 2 पोटेशियम अलग हो जाएगा. ठीक है.
अब मेरा ख्याल है बाकी तो आप कंप्लीट कर ही सकेंगे। तो ये कहाँ जाएगा, ये नोट पे जाएगा बिकॉज इट्स एन एनाइन। ये कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा बिकॉज इट्स अ कैटआयन। सही लिखा है मैंने? नो रिस्पॉन्स। ये कैटाइन है तो इसको जाना चाहिए भाईजान कैथोड पे। ये एनाइन है तो इसे जाना चाहिए एनोड। तो देन सी एच, सी डबल ओ, सी एच, सी डबल ओ नेगेटिव, okay, would lose electrons at anode and will form free radicals, and then फिर क्या होता था, फिर होती थी फ्रैक्शनेशन, इंटायर यूजुअल साइकिल। तो अब क्या बन जाएगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच विथ CO2 and CO. So that's how ethine is formed. Can I change my slide then? तो ये फ्री रेडिकल बना लो इसको, सही है, ठीक है। Okay, number 6. What do we have? We have alkynes from halo form. So we can prepare alkynes from halo form. So halo form is essentially, अच्छा वैसे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे ऐसे भी लिखता हूँ so that you know you guys can know कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। With 6 silver, सिल्वर टेस्ट भी कहते हैं इसे, आप हीट करेंगे तो क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड बनेगा, वायलेट, येलो वायलेट पीपीटी देगा और क्या बना लेगा, इथाइन बना लेगा। सो अगेन एज यू कैन सी कि इसमें यूजुअली बड़ी चेंज हम यूज नहीं कर पाते, तो हम सिर्फ इथाइन ही बना रहे हो। सही है, ठीक है भाई, आप लोग जिंदा हैं, मेरे साथ हैं, या मैं अपने आप से बातें करूं? नंबर 7। थैंक यू। तो अच्छा, ये वाला रिएक्शन जो है ना, इस फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, इसको कुछ बुक्स में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी कहते हैं। पंजाब बोर्ड वाले इसे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी कहते हैं। तो इसका नाम है, अगर कोई आपसे पूछ ले तो यू कैन से। तो फर्स्ट इज, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। स्टेप 1 where calcium oxide reacts with carbon at 2000 डिग्री सेल्सियस। तो इस कार्बन को हम कोक फॉर्म में यूज करते हैं और that forms a calcium carbide alongside carbon monoxide, that is calcium carbide. And then this step 2 is where we have this calcium carbide reacting up with honey, and we have slaked lime, that's calcium hydroxide and ethyne gas. अच्छा, अगर मैं एक दफा देख लूँ तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सिम बोर्ड के अंदर हल्का सा डिफरेंट साइकिल हो। हाँ, आई वॉज टॉकिंग टू अबाउट ए लेवल्स के कैसा चल रहा है, आई कैन एम्पैथाइज।
बट व्हेन आई स्टार्टेड अप द क्लास, किसी ने मुझसे इस सिलसिले में बात नहीं की। सबने कहा कि हाँ भाई अच्छा चल रहा है। तो मैंने कहा तुम लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होगे भाई, बहुत ज्यादा चीता टाइप के होगे। मेरा तो इन दिनों में वैसे ही हालात अपने ए लेवल्स के टाइम पे बहुत बुरे होते थे। मुझे तो वैसे ही गुस्सा आ रहा होता था, हर बात पे गुस्सा आ रहा होता था, और सिवाय पढ़ाई की दुनिया की हर चीज अच्छी लग रही होती थी। न्यूज भी अच्छी लग रही होती थी कि कोई न्यूज देख लूँ मैं। तो फिर मैं चुप हो गया। मैंने कहा यार अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है, इन बच्चों को अच्छा चल रहा है तो छोड़ो, फजूल में तंग करने वाली बात है। पढ़ाकू टाइप के बच्चे होते हैं ना कुछ। तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा भाई सही है, अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है। मैं गुड न्यूज कैन बी आपको थोड़ा ज्यादा नहीं करेंगे हम। यूजुअली दे हैव प्लान्स कि हम अपने इन एप्टीट्यूड क्लासेस को थोड़ा चेंज कर देते हैं near your मॉक्स इन कॉलेज। उसके बाद फिर हम बाद में थोड़ा रेस्ट देने के बाद फिर हम क्या कह रहे हैं, चेंज माई स्लाइड। नंबर 6 था वो, नंबर 7 हो गया, नंबर 8। तो नंबर 8 इज बर्थ क्लॉट्स रिएक्शन, which is carbon reacting with hydrogen at 1200 degrees Celsius, an electrical spark, which is an electrical arc, जैसे welding flame होता है वो, so it transforms to ethine. That's specific for ethine only. Then from methane, तो मीथेन का क्या करते हैं, मीथेन की थर्मल डिकम्पोजिशन कर देते हैं। तो CH4 लेते हैं और 1500 डिग्री सेल्सियस पे इसको लेके जाते हैं और इलेक्ट्रिकल आर्क अगेन यूज करते हैं, वेल्डिंग फ्लेम, एंड इट ट्रांसफॉर्म्स टू इथाइन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। पोटेंशियली और तो कुछ ऐसा नहीं है जो प्रिपरेशन में रह गया। और प्रिपरेशन में सेल बोर्ड तो बिल्कुल ही फारिग है। पंजाब बोर्ड के अंदर तो फिर भी कोई प्रिपरेशन थी थोड़ी बहुत, कोशिश करके मैंने आपको सारी लिखवा दी है प्रिपरेशन। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। और इथाइन होंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी नहीं, सिर्फ इथाइन की। तो कलरलेस गैस विथ, ओ सॉरी, कलरलेस गैस लिखना चाह रहा था मैंने, कलर गैस। कलरलेस गैस विथ sweet milk. Then we have slight solubility in pani. Then we have less dense than air. Then we have explosive nature. Then it's the usual French. French क्या होगी, हमने क्या कर लिया, हमने फिर सारी प्रिपरेशन कर ली। तो अब क्या होगा, बताओ क्या कहते हो, अब क्या होगा इसके बाद। रिएक्शन होंगे, और पेट भर के रिएक्शन होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो अल्काइंस होते हैं वो मल्टीपल एडिशन रिएक्शंस कर रहे हैं। तो अब हम वो करना चाहेंगे।
तो वो अभी आप कहते हैं स्टार्ट कर दूं या फिर कल करूं? उसका तो मसला नहीं है। बेसिकली क्या कहते हैं यार, इसके ऊपर हम क्लोज टू सीआई इस पर बात कर लेंगे थोड़ा सा। और केमिस्ट्री व्हाट यू कैन डू फॉर योर सीआई एग्जाम्स। कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास? 4 5 हुसैन? 3। आई हैड 5 स्ट्रेट एज, चीता टाइप। मैंने फर्दर भी रखा हुआ था, बायो नहीं था मेरे पास। भाई बाकी लोग क्लास में कोई बात करने वाले नहीं है, मतलब सही है, ठीक है भाई, हम लोग आपस में बातें कर लें। तो जिन लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया उसमें से मुझे ज्यादातर ने कहा सर केमिकल रिएक्शन आप कल करा दीजिएगा। तो आई एम गोइंग विद दैट कि कल कर लेंगे हम बाकी काम। अगर आप में से कोई अभी उसके पास थोड़ा सा वो है, यानी कि टाइम है आपके पास, तो आप ये कर सकते हैं कि आपने जैसे इथीन के सॉरी अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस किए थे, अब ऐसे ही अल्काइंस के भी एडिशन रिएक्शंस कर सकते हैं। तो उसमें जो चेंजेस होंगे फिर वो हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। सही है? तो वी कैन एंड दिस क्लास हियर। बाकी बात इंशाल्लाह ताला आपसे कल करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।